team, man from Pune, Rajesh Sorte. So these are the two outstation players for the team of Udargad Mandre and two outstation player for the team of Udargad Harmal. We have Bhushan Goe and Akshay Tauri. Credit goes to the MLA of Mandrem constituency as well as chairman of Goa Housing Board, respected Sajjit Arolkar, for such a beautiful organization. First time in the history of Goa we can see such kind of big awards are being kept for the players. And if you have the passion and love towards cricket, then you can organize such kind of tournament. And he himself is a very good sports person. The signal has been coming from the umpire. Siddesh Harmalkar, man from pair name, the main screen umpire, and along with him, Sushant Sangaonkar, the square leg umpire. All set for the ball number one, Rajesh Sorte. Overseas to overseas, man from Satara, Bhushan Goe can be seen onto the striker's end. The first power play over is in progress. Pitching up down to that offer side. Beautiful line was been required. And that was been given from the end of Rajesh Sorte, the start that has been required. Usually, Nikhil, if you generally see 8 overs match from here, and the target, as you're watching a lot of tournaments happening on this ground, I would say a target of at least 90 to 100 will be a better target for the team that is being batting first. Rajesh Sorte once again will be ready in his action. Beautifully driven, not that much execution. Still will be managed to clear that 30-yard circle. The ball has been racing into that long off fences, and that is the first boundary coming off of this Amdar Chashak from the bat of Bhushan Goe. Beautifully driven. Generally see the observation, the way Bhushan Goe bats, has a lot of ability to play shots such as front foot covered rise, backward square cut, pull, hook. That is his ability. This time driving in front, there is a protection as soon as the fielder from the point region comes on a screen, collects the ball off. Another single runs will be definitely added, and with that single, 5 runs can be seen on the scorecard. If you generally see the batting of Dhananjay was another talented batter that has been coming from the end of Harmal, and he will be thinking with a mindset that yes, this is a great condition for me and I should bet on for my team. Lot of hope has been coming out from the dugout for me, and I should realize and I should keep hope onto that dugout. Now to that offside, beautiful square cut has been offered. The ball has been racing, 2 fielders taking a chase on that. The ball has been sailing into that deeper backward point, and that's been going for an rolling boundary. Was at front foot a straight drive, then came on the back foot from the end of Dhananjay square cut. The observation has been clearly beautiful from both the batters. Rajesh Sorte will be always trying to come back in the equation. He will be saying that a wicket is been required on the center of the pitch. Down to that leg side, a strong appeal was been seen coming on to the main umpire, but no damage done of the leg by, says the umpire. Single has been added. And with that single, score has been moving to a double digits mark, that is 10 runs on the scorecard. Bhushan Goe once again will be on to the strikers, and 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. A long on as well as a deeper mid wicket can be seen. Pitching and shutter, what a shot! On the back foot, a punch has been offered from the end of Bhushan Goe. That is his favorite. We can see a lot of shots played from him in the big tournaments, and today he is discovering it into this Amdar Chashak. Another boundary coming off from the bat of Bhushan Goe. Score has been moving to 14. That's the completion of the over number 1, and after completing first over, it is 14 without any loss. DJ.
from here, and after completing the first power play over, 14 runs can be seen. Two beautiful shots from the bat of Bhushan Gole, one good shot from the end of Dhananjay Vasa. Vijay Pauli can be seen bowling from the far end of the commentary box, and he will be coming with a mindset that first over from the end of Rajesh Sorte, runs were been leaking from our end. It is time to put some barrier, it is time to put some restriction. A delicate touch, sensibly played, respectfully played, giving the strike to Bhushan Gole. Bhushan Gole will be coming on our screen. Another single runs will be added, and with that single, score has been moving to 15. It is said that in any format of sport, hard work has no option. And if your hard work has been better, then success has no option. Why Bhushan Gole has been selected in the form of icon player? That he has already given in the end of that first over, 2 boundaries. Here we go. Another beautiful delicate touch, full toss that was being played with a leg glance. Deeper mid wicket comes on a screen. Little bit of fumble was being seen, but the restriction has been coming on just with the single. With that single, the score has been moving to 16 runs on the scorecard. The official scorer of this entire Amda Chashak with me, Nikhil Kudav, man from Harmal. Pitched up shorter down to that officer. Wanted to go above the head of the point fielder. Was the idea from the end of Dhananjay. But I will say the ball was been lacking pace on that occasion. A slower delivery, backing the ball, rolling the fingers on the ball and taking the pace of the ball off. That was been seen from the end of Vijay Paule. That is what he's been brought in the form of an icon. Why I've been selected in the form of an icon. That statement Vijay Pauli will approve. Down the leg side, a wide has been called off. Extras will be taken care of. The penalization has been coming off for the bowler in the form of an extra. Another single will be counted. With that single, 17 runs can be seen. Dhananjay Vast onto the striker's end. Pitching up shot up. What a beautiful shot. There is no deeper protection into that backward point. The ball has been racing away. Another boundary coming off from the bat of Dhananjay Vast. Another 4 more run adds. Score moves to 21. On the scorecard, Dhananjay Vast is getting the start that was been required for the end of Udargat Harmal, and he will be wondering that yes, I should continue in a similar kind of momentum. I should take my team to the safer side. Vijay Pauli. Beautifully driven into the front of the wicket. The ball has been racing down across that side screen, and we can see a beautiful boundary from the end of Dhananjay Vast. Always say that whenever is batter is able to drive the ball easily, cut the ball easily, pull the ball easily, hook the ball easily, that tells you the ability of the batter. And this time Dhananjay Vada with a high Monty gun. Slower delivery down to the upper side, just placing it denied with a single from the end of Bhushan Gole. And with that, the dot delivery has been signed off for the bowler. Over number 2 from the end of Vijay Pauli comes towards end, and after completing 2 overs, 25 runs can be seen on the scorecard. TJ. It is a 25. The signal has been coming from the main screen umpire. It is a batter's choice power play. The beautiful scenario, the beautiful note of this tournament is that all the 3 power plays have to be bowled by 3 different bowlers. Usually we can see the strong contender usually bowls 2 bowlers, but this time it is some other kind of rule can be seen into this Amdar Chashak.
To bowl the first off from his quota and the third over for his team, Rushikesh can be seen on the bowling mark. Onto the strikers end, Bhushan Gole onto the non-striker end, Dhananjay was. Both are being settled quite onto the center of the pitch. Now from here, Nikhil, if you generally see, they will be wondering that yes, 100 is still gettable. We can chase that 100 mark. Bhushan Gole and Dhananjay was will be saying that. Fielders, if you generally see now, three fielders will be going outside that 30-yard circle, a deeper mid-wicket for a right-handed batter, a long on, and a deeper extra cover. These are the three fielders that have been placed for the right-handed batter, that is Bhushan Gole. Rishikesh will be continuing with respect to the first over from his quota and the third over for his team. Down to that offer side of the idea from the end of Bhushan Gole. Just wanted to go with a big shot and at the final moment change his decision. Wanted to play on that back foot. Result was a dot. This is what Rushikesh has been known for. Usually has played lot of tennis ball cricket. Is one of the strong contender when it is said to be the side of Mandrem. And today he needs to deliver for the side of Udargand Mandre. Lot of hole will be coming out from the dugout for Rushikesh. He was attempted, not a good idea. Beautiful bowling from the end of Rushikesh. This is the strength, this is the reflection that has been shown from the end of Rushikesh. Why have been known as one of the stronger bowler when it is said to be Mandrem. With this type of two dot deliveries, he's been giving the reflection. Bhushan Gole onto the striker end will be now getting some momentum. He will be saying that yes, in the previous two deliveries I have been going for a dot ball. Now I need to shuffle with respect to my stance has been considered. Down to the offer side, punching it as soon as two fielders will be running onto that occasion. Due to some heavy outfield, we will be just getting couple of runs. Couple of runs will be added on the scorecard, and with that too, 27 runs can be seen on the scorecard. The match going between Udargat Harmal and Udargat Mandrem. Over number third is in progress. Along with me in the commentary box, Sunny Shetty, man from Torsema. Then we have Sham Kalangudkar, all the way from Shapura. Tushar Naik, all the way from Penjim. Savaram Shirodkar, all the way from Satose. Moving back to the screen, a beautiful drive has been seen from the end of Bhushan Gole. It is straightly resulting into the hands of that mid-off fielder. Nothing damage done. If you generally see the summary of this over, the power play over, that is a batter's choice power play. Just 2 runs are been considered from the end of Rushikesh. Dancing down the track, wanted to go with a big shot, straightly onto that non-striker's end wicket. Some fingers, Nikhil, from the end of Rushikesh. I would say from here, Dhananjay was in a trouble onto the non-striker's end. And such kind of dismissal we have seen, whether we are watching the local tournaments or whether it is the international format that we have been seeing. Score just on 27. Bhushan Gole having a word with Dhananjay was. Dhananjay was has been saying, giving some confidence that go on and play your natural game. We know that what kind of ability Bhushan Gole has been usually got, and today he will be also saying that I should deliver for the team of Udargat Harmal. Swing of the bat, getting some part. A leg slipper will be coming on a screen. A direct hit was been coming onto that striker, and what will happen? We will look as soon as the ball has been reflected. Yes, the signal has been coming from the square leg umpire to the TV umpire. So TV umpire, we have a umpire review for the run out onto the striker's end. In between, what will happen? It's over to the TV umpire. Meanwhile, what a beautiful organization, Amdar Chashak, led by Udargat Mandrem. The credit goes to the MLA of Mandrem constituency as well as chairman, Go Housing Board, Chitarulkar. Cricket.in, whether the batter is reaching in his popping crease or not. Yes, and that's out. The batter needs to go back into the dugout. The dismissal that Udargat Mandre has been looking for, a beautiful fielding effort from that short leg fielder, and he is giving the confidence. Dhananjay needs to go back into the dugout. DJ.
27 to the dismissal of 1 wicket is the scorecard telling us. And Nikhil, what has happened into that over of Rishikesh? If you generally have the summary of that power play batter's choice over, just 2 runs are been considered and the wicket was been taken in the form of the run out. New batter coming onto the center of the pitch is a left-handed batter, that is Sachin Naik. He will be onto the non-striker and as the over number 3 coming towards end. 27 on the scorecard. Also big welcome to Malwani Badal Chaudhary all the way from Kudar. He is also joining us in the commentary box and we will be moving towards him in the second half of this match. Meanwhile, now all the 3 power plays are been coming towards end. 5 fielders will be seen backing the boundary row for right-handed batter, that is Bhushan Gole. We can see long on, cow corner, deeper mid-wicket, deeper extra cover, long off. These are the 5 fielders that have been placed. And Vijay Pavle, the icon players, the overseas for Udargat Mandre, will be bowling his second over from his quota and the 4th over for his team. 27 on the scorecard with the dismissal of 1. Pitching up shorter down to the legger side, just the deflection from the end of Bhushan Gore. The ball has been coming into the hands of that legger sleeper in the form of that shot a fine leg and nothing damage done. If you generally have the summary of last 4 balls that Bhushan Gore has been facing Nikhil, and he will be saying that it is back-to-back 4 dot balls from him. Little bit of fumble with respect to the run-up. Bhushan Gore coming all the way from Satara. Hello? DJ माशी request light आहा ती बंद करपाची. Spotlight. Beautiful bowling from the end of Udargat Mandre from that last over. The momentum has been caught up from Udargat Mandre in the bowling department. Bouncing the under track, not that much execution. There is a protection as soon as the fielder from the deeper square leg will come and collect the ball off. Another single runs will be definitely added. And with that single, 28 runs can be seen. Sachin Naik, another left-handed batter who is in a tremendous touch this year. A lot of 2-3 tournaments in the last 2-3 weeks he's been playing as getting a performer in the form of best batter, man of the series, and today he will be thinking this is a big match setup, this is a big organization and I should play for my home team. With this kind of mindset, the new batter Sachin Naik will be coming onto the center of the pitch. While onto that bowling of Vijay Pavle, this is the strength, this is the backup that he has been providing for the end of Udargat Mandre. Why I have been selected in the form of an icon player? People know me for my beautiful bowling performance. Why I have been in the hearts of a lot of people? That Vijay Pavle has been reflecting. Down to that offer side, wanted to go with a pull shot, cannot come from the center of the radar, might be turning away for a left-handed batter. We cannot predict from this commentary box, but the production we can see from the end of the bowlers. Last 2 overs, a total impact. Last 9 balls, just 3 runs are been considered. This is what my colleague scorer Nikhil has been telling me. Down to the leg side, too much pace, that is what he's been known for. Single will be added of the leg by, says the umpire. However, the run comes now. Harmal will be taking the runs. Single run adds in a favor with that single. Score moves to 29 on the scorecard. From here, I will say Nikhil, another 4 overs to come after completing these 4 overs. Bhushan Gore needs to think a little bit that I've been doing for a lot of time in my career. Today is a different kind of opportunity. Can I take my team to that charge role of 100? Can I play a match-winning knock from my batting side? With this kind of efforts, the Bhushan Gore will be trying to do. As I said, played into the straight region, just falling short of that long on. As soon as the calculation was been seen, Sachin Naik will be getting that strike of another single runs will be added. And with that single, 30 can be seen gettable onto the scorecard with the dismissal of 1 wicket. From here, Bhushan Gore is finding some difficulty, to trace the ball on the center of his bat. The first 2 overs, they will be batting really well. The 2 shots that he played on the square cut, the back foot, the square cut that was been played, and on the front foot, the straight drive that was been played. That was been good from the end of Bhushan. But till now, I will say, last 2 overs, Rishikesh and now Vijay Pavle, a high voltage drama from the end of the bowlers of Udargat Mandre.
Swing and a miss. Huge swung was being offered from the end of the left-handed batter Sachin. A nice carry can be seen into the hands of the wicket keeper. Over number 4 comes towards end. After completing 4 overs, it is 30 on the scorecard with the dismissal of 1. What will happen? Can the coming 4 overs, the bat of Bhushan Gole turns out to be a strategical one? Lot of batting to yet to come from the quota of Udargat Harmal. Can we say a target of 100 is been manageable, or can the end of bowlers of Udargat Mandrim restrict them within that 70 to 60? We'll find out as we are moving to my colleague commentator Sunny Shetty back in the commentary session. मांद्रे की ओर से माननीय श्री जीत आरोलकर सर के सौजन्य से तथा स्वर्गीय प्रदीप हटफड़कर की पावन स्मृति में आयोजित आमदार चषक 2026 में मैं सनी शेट्टी सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है सिर्फ और सिर्फ 30 रन। पहले जो ओवर थे वाकई में लाजवाब ओवर रहे थे, कुल मिलाकर 25 रन आए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूंगा उस एक्सेलरेटर पर पांव सा दबाया, ब्रेक सा लगाया उस पारी को और स्कोर आ चुका है कुल मिलाकर 30 के ऊपर। आखिर के जो 2 ओवर ऋषिकेश गावड़े उसके साथ साथ सर विजय पावले कुल मिलाकर 4 ही रन दिए, यानी कि पहला पड़ाव पार कर लिया है। बचिए और कुल मिलाकर 4 ओवर। इस 8 ओवर के मुकाबले में देखना होगा किस प्रकार के साथ बल्लेबाजी करेंगे, क्या होगा टारगेट जो सामने रखेंगे उदरकत मांद्रिम के सामने। पांचवा ओवर लेकर राजेश सोरटे हमें बॉलिंग मार्क के ऊपर दिखाई देते हुए। पहली गेंद फुल टॉस गेंद स्लाइस किया, गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, कृष्णा डाफले वहां पर मौजूद, लेकिन सिर्फ एक सिंगल चुराया। सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई 31 के ऊपर, 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट, बहुत ही बढ़िया इस प्रतियोगिता का आयोजन, बहुत ही बढ़िया इस प्रतियोगिता का नियोजन, बहुत ही बढ़िया सुंदर ये मैदान और इस समुद्री हवाएं के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक समय के लिए लगा था कि पहले 2 ओवर के बाद कम से कम 100 का आंकड़ा तो पार जरूर करना चाहेगी उदरगत हरमल की टीम, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ब्रेक लगता हुआ इस पारी को। लेकिन अभी भी आपके पास गेंदें बाकी है, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी। इसके बाद क्या आप यहां से वो गति प्राप्त कर सकते हैं नहीं, ये देखने लायक बात होगी। इस बार गेंद पैर पर जाकर टकराई, अपील, लेकिन उस अपील को भेदा लेग बाइस के जरिए यहां पर रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन और इस 1 रन के साथ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। भूषण गोड़े आइकॉन के रूप में यहां पर मैन फ्रॉम सातारा, बहुत बड़े प्रतियोगिता में हमने उनको देखा है अपनी छापी छोड़ते हुए, लेकिन इस बार उनके पास मौका है अपनी टीम के लिए कुछ कारनामा करने का। राजेश सोठे एक सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। इस बार कट किया, गेंद हवा में, लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रयास था, लेकिन 2 फील्डर्स के गैप में से गेंद जाती हुई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक समय के लिए लगा था कि गेंद शायद 4 रन के लिए जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कल के दिन गोवा राज्य के विविध भागों में थोड़ी सी मैं कहूंगा बारिश की संभावना थी, बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन इस मोर्चम की सतह के ऊपर उसका कोई नामो निशान नहीं। बहुत ही बढ़िया ये सतह है क्रिकेट के खेल के लिए। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा उदरगत मोर्शिम और उदरकर विरनोड़ा, इन 2 टीमों के बीच में। इस बार लो फुल टॉस फ्लिक किया और इसे गेंद को सीमा पार भेज दिया 6 रन के लिए। तगड़ा स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ भूषण गोड़े के बल्ले से। को मिला
इस बार अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, अपील अपील, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। यहां पर सिंगल मुकम्मल किया और इस सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 के ऊपर, 41 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 5वें ओवर का यहां पर खेल चलता हुआ इस प्रतियोगिता में, इस पारी में पहला ये मुकाबला उदरगत मांद्रेम और उदरगत हरमल के बीच में। उदरगत मांद्रेम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है इस मुकाबले में। देखना होगा किस प्रकार के साथ ये फैसला सही साबित होता, ये तो इस पारी के बाद ही हमें समझने को आएगा। इस बार घुमाया, लेकिन ये देखिए गेंद अंदर, डंडा बाहर, विकेट यहां पर मिलता हुआ राजेश सोटे को। और इसके साथ मुकाबला खेला जाएगा उदरगत मुर्शिम और उदरगत विरनोड़ा इन दो टीमों के बीच में। विनती करूंगा दोनों टीम से आपको रेडी रहना है अगले मुकाबले के लिए। अभी जो मुकाबला चलता वो उदरगत हरमल और उदरगत मांद्रेम इन दोनों टीमों के बीच में। पहले पारी का यहां पर खेल चलता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका 41 के ऊपर, 41 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इसके बाद 3 ओवर यानी कि 18 गेंदे, 18 महत्वपूर्ण गेंदे प्लेटफॉर्म यहां पर सज चुका है। आपको यहां से हवाई फायर करना है क्योंकि जानते हैं स्कोरबोर्ड की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 41 रन। आपके सामने बहुत ही तगड़ी टीम जो कि उदरगत मांद्रेम खड़ी है, अगर उनको आपको हराना है तो आपको एक बड़ा टोटल सेट करना होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए भूषण गोड़े जिनकी मैं बात कर रहा था आइकॉन के रूप में इस खेमे में मौजूद है, उनको वो काम करना होगा अपनी टीम के लिए। प्रवीण सावंत बॉलिंग मार के ऊपर हमें दिखाई देते हुए, एक मीडियम पेसर राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद लेकर तैयार अपने स्पेल के पहले ओवर की। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ घुमाने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर डॉट गेंद। पहली गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीचे रही, इसके कारण जो संपर्क चाहिए था ठीक तरह से वो मिला नहीं। डॉट गेंद के साथ एक डॉट गेंद में कहूंगा दबाव यहां पर बनाए रखेगा उदरगत हरमल के ऊपर। इस बार वो पिच गेंद, इस गेंद के ऊपर हावी हुए, लेकिन देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क। जी हां बिल्कुल 6 रन मिलेंगे, उतना बढ़िया लाजवाब स्ट्रोक भूषण गोए के बल्ले से निकलता हुआ। के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड परावर्तित होता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 47 के ऊपर, 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जी हां धन्यवाद डीजे। फिर से एक बार घुमाया, देखना होगा फिर से एक बार कितना बढ़िया संपर्क, पूरे आधा डजन रन मिलेंगे, उतना बढ़िया। 1 brings 2 और उनके बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का और इसके साथ 50 का आंकड़ा भी छू लिया है। स्कोर पहुंचता हुआ 53 के ऊपर। डीजे छत्तीस रन के ऊपर खेलते हुए यहां पर भूषण गोए। स्कोर पहुंच चुका है 53 के ऊपर, 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, यह देखने लायक बात होगी। प्रवीण सावंत थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए। ऋषिकेश गावड़े का ओवर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ था उदरगत मांद्रेम के खेमे में, लेकिन अब वो मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ उदरगत हरमल के खेमे में। इस बार गेंद बहुत ही बढ़िया थी, फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास था, लेकिन
छू के वहां पर सिर्फ एक सिंगल मुकम्मल किया। सिंगल के साथ यहां पर मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है 54 के ऊपर। 54 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। इसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी। इस ओवर के अगर मैं विश्लेषण करूं तो पहली गेंद के ऊपर डॉट, उसके बाद सिक्सर और फिर एक सिंगल। 2 गेंदों का खेल अभी बाकी इस ओवर में। ये देखिए स्लोअर गेंद, चकमा दिया, मिश्रण किया, फंबल वहां पर फील्डर, लेकिन 2 रन चुराने में कामयाब। 2 रन के साथ यहां पर मंजिल आगे बढ़ते हुई स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 56 के ऊपर। 56 रन ऑन द स्कोर कार्ड। यहां पर अपने लाइन और लेन में सुधार लाया प्रवीण सावंत ने। अक्सर हम अंग्रेजी में कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट रूम फॉर द इंप्रूवमेंट इज द इंप्रूवमेंट। यहां पर इंप्रूवमेंट यहां पर करते हुए अपनी बॉलिंग मार्क में प्रवीण सावंत। छप्पन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। देखना होगा कितने रन बना पाएंगे उधर गधर्मल की टीम। इस बार घुमाया, ये गेंद हवा में। देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, फील्डर वहां पर तैनात और सीधा उनके हाथों में, कोई गलती नहीं की। बहुत ही बढ़िया अंजाम यहां पर इस ओवर को देते हुए प्रवीण सावंत। विनती करूंगा दोनों कप्तान उदरगत मोरजिम और उदरगत विरनोडा, इन 2 कप्तानों को कि चलिए आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने संपर्क कीजिए। जी हां, सर तुषार नायक मौजूद है, आप उनके पास संपर्क कीजिए टॉस के लिए। उदरगत मोरजिम के कप्तान और उदरगत विरनोडा के कप्तान। हेलो हेलो। 6 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 6 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 56 के ऊपर। 56 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बची है 12 गेंदे, 12 महत्वपूर्ण गेंदे मैं कहूंगा। और फिर से एक बार वही गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर ऋषिकेश गावड़े। पहली गेंद तेज तरारी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, कोई यहां पर जवाब नहीं था। निम्नलिखित जैसा ये प्रश्न और भूषण घोड़े कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर डॉट। ऋषिकेश गावड़े लाजवाब सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं इस पारी में। स्लोअर गेंद, कट किया गेंद हवा में, फील्डर वहां पर तैनात और कोई गलती नहीं करेंगे। एक और यहां पर झटका लगता हुआ, इस बार मैन इन फॉर्म भूषण गोए लौटते हुए पवेलियन की ओर। डीजे Udargat Morjim and Udargat Virnoda to kindly come for the toss. Both the captains, please come for the toss. नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नितेश गड़ेकर, मिस्टर 360 डिग्री। देखना होगा किस प्रकार के साथ बल्लेबाजी करेंगे इन आने वाली गेंदों के ऊपर, क्योंकि जानते हैं स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 56 के ऊपर। यहां से कम आपको 70 या फिर 80 का लक्ष्य तो पार करना ही पड़ेगा अगर एक फाइटिंग टोटल आपको खड़ा करना है तो। ऋषिकेश गावड़े यहां पर लाजवाब मैं कहूंगा सहायता करते हुए अपनी टीम के लिए। परिपक्व ये खिलाड़ी, परिपक्व ये गेंदबाज और गेंदबाज का मुजाहरा बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर टीम के लिए दिखाते हुए। इस बार यॉर्कर की गेंद, ये भी गेंद हवा में, क्या ये कैच की संभावना? ओहो हो, क्या लाजवाब प्रयास था। जी हां बिल्कुल, तालियां बजनी चाहिए। शांताराम वहां पर मौजूद थे। प्रयास के आपको 10 में से 11 नंबर जरूर मिलेंगे, भले ही वो कैच कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास आपको पूरी जान झोंकते हुए इस मुकाबले में, इस पारी में, इस कैच में
58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जब इस प्रकार की आप फील्डिंग करते हैं ना, तब गेंदबाज का भी हौसला बहुत ही बुलंद हो जाता है। इस बार घुमाया लीडिंग एज, गेंद हवा में, विकेट कीपर कोई गलती नहीं करेंगे। एक और झटका यहां पर लगता हुआ नितेश गड़ेकर इस बार लौटते हुए पवेलियन की ओर। Morjim and Udargat Virnoda, kindly come for the toss. 4 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और इस ओवर का अगर मैं विश्लेषण करूं तो 2 विकेट निकाले हैं और सिर्फ 2 रन दिए हैं, यानी कि तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही खुश होगा उदरगत मांद्रेम का खेमा, क्योंकि जानते हैं पहले जो 2 ओवर थे उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ पूरा का पूरा उदरगत मांद्रेम के खेमे में। इस बार हल्के हाथों से स्टीयर करने का प्रयास था, लेकिन खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं दूर। सिर्फ एक सिंगल मुकम्मल किया। 1 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 59 के ऊपर। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बाकी। देखना होगा इन 7 गेंदों के ऊपर कितने रन बटोर पाएंगे उदरगत हरमल की टीम। जानते हैं स्कोर थोड़ा सा लो है इस सतह के ऊपर, लेकिन अभी भी आपके पास मैच पलटने का मौका जरूर है। इस बार घुमाने का प्रयास, लेकिन फिर से एक बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। नतीजा यहां पर डॉट गेंद। इसके साथ ओवर की भी समाप्ति, यानी कि 7 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 59 के ऊपर। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे ऋषिकेश गावड़े कि अगर गेंदबाजी का विश्लेषण करूं, कुल मिलाकर 2 ओवर 5 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट, यानी कि लाजवाब गेंदबाजी, परिपक्वता भरी गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। इस पारी की आखिरी ओवर बॉलिंग मार्क के ऊपर हमें दिखाई देते हुए शांताराम, जिन्होंने लाजवाब प्रयास किया था अपनी फील्डिंग में, लेकिन वही प्रयास फिर से एक बार करने के लिए अपनी बॉलिंग के मोर्चे के ऊपर हमें दिखाई देते हुए अपनी टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर इस पारी में सामना करेंगे रितेश नायक। उनसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कम से कम आपको 70 या फिर 80 रन तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा इस सतह के ऊपर। पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन, ये गेंद वाइड करार दिया है अंपायर ने। अतिरिक्त रूप में यहां पर रन जुड़ जाएगा स्कोर बुक में। स्कोर पहुंचता हुआ 7 के ऊपर। इस बार घुमाना चाहते थे, लेकिन फिर से एक बार बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से डॉट डिलीवरी। अपने लाइन और लेन में सुधार लाया, थोड़ा सा मैं कहूंगा लेन को बदला और इसके कारण डॉट डिलीवरी स्कोर बुक में दर्ज होती हुई। शॉर्ट पिच खेन फुल किया, फील्डर वहां पर मौजूद, डीप मिड विकेट की दिशा से जब तक फील्ड करते थ्रो करते सिर्फ एक सिंगल चुराया। सिंगल के साथ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कम से कम आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक सा लगाया है इस पूरे पारी में उदरगत मांद्रेम ने।
क्योंकि जानते हैं हर एक मुकाबला यहाँ पर कड़ा होने वाला है 13 पसीनों, यानी कि हर एक खिलाड़ी जो कि 12th मैन भी होगा ना, वो अपनी जान झोंकेगा इस मुकाबले में, ये बात तो तय है। जी हाँ बिल्कुल, इस बार घुमाया, बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद तीर की तरह सीधा जाता हुआ, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, सिंगल चुराया और सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ यहां पर मंजिल आगे बढ़ते हुए स्कोर पहुंच चुका है 62 के ऊपर, 62 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस प्रतियोगिता का एक नियम है कि जो 15 के 15 खिलाड़ी है उनको हर एक मुकाबले में आपको एक मौका देना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत इस प्रतियोगिता का आयोजन, इसके संरक्षक श्री जीत आरोलकर सर, उनके सहायता, एक अटूट उनका सपोर्ट इस प्रतियोगिता में। इस बार अंदरूनी किनारा, यहां पर हाना हाना, ये देखे गड़बड़ी यहां पर, लेकिन अंत भला तो सब भला, एक रन मुकम्मल किया, सही सलामत क्रीज में लौटे। कुछ देर के लिए जान हालत में थी, लेकिन सिंगल के साथ 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर का ये खेल चलता हुआ, इसके बाद कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल बाकी, 2 महत्वपूर्ण गेंद मैं कहूंगा। देखना होगा क्या रणनीति होगी, क्या मंशा होगी। शॉर्ट पिच गेंद को जाने दिया और जी हाँ बिल्कुल वाइड करार दिया है अंपायर ने। गाइडलाइन से बहुत बाहर ये गेंद, इसके कारण कोई संदेह नहीं अंपायर के मन में। जी हाँ, रिफर किया है इस डिसीजन को। वाइड डिलीवरी, जी हाँ बिल्कुल, अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन के ऊपर। इस बार घुमाया आड़े बल्ले के साथ, फील्डर वहां पर तैनात और फिर से एक बार कोई गलती नहीं करेंगे। प्रवीण वहां पर मौजूद थे और एक और झटका यहां पर लगता हुआ, 5वां झटका, आधी टीम डगआउट में लौटती हुई। झटका यहां पर लगता हुआ, अचिंत्य नायक ने बल्लेबाज मैदान के भीतर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और इस पारी की भी। देखना होगा इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या मंशा होगी अचिंत्य की। इस बार घुमाया, गेंद स्लॉट में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात और फिर से एक बार कोई गलती नहीं करेंगे। प्रवीण फिर से एक बार उस कैच को लपकते हुए और इसके साथ तीसरा कैच उन्होंने लपक लिया इस पारी में। ओवर की समाप्ति और पारी की भी समाप्ति। स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 64 और 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। इस पारी का अगर मैं विश्लेषण करूं तो ओपनर के तौर पर आए थे भूषण गोए, उनका साथ दिया था धनंजय वस्त ने। भूषण गोए लाजवाब पारी खेली, 37 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद धनंजय वस्त 13 रन, उसके बाद सचिन सस्ते में लौटे 0 के ऊपर। अक्षय थावरे कुल मिलाकर 2 रन बनाए। उसके बाद विशाल वांगणकर, नितेश गड़ेकर कुछ खास, नायक 2 रन बनाए और अचिंत्य नायक आखिरी में अपना विकेट गवा बैठे। स्कोर पहुंच चुका है 64 रन, 7 विकेट के नुकसान।
तक के लिए सुनते हैं डीजे के कुछ सुनहरे गाने और अगले इनिंग की शुरुआत करेंगे सर गुरुवर्य सर बादल चौधरी दूसरे इनिंग का आगाज करेंगे। तब तक के लिए मैं सनी शेट्टी थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। स्वागतम सुस्वागतम। 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती विघ्नहर्ता गणपती गजानन, विद्येची देवता माता सरस्वती, संपत्तीची देवता माता लक्ष्मी, इथली ग्रामदेवता, स्थानदेवता, सर्वांच्या कुलदेवता आणि इष्ट देवता या सर्वांना मनोभावे नमन करून छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांना मानाचा मुजरा करून आपले सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट आणि कार्यतत्पर आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या संकल्पनेतून कैलासोचे प्रदीप हडपडकर यांच्या स्मरणार्थ उदरगत मांद्रे आयोजित आमदार चषक 2026चा थरार आपण पाहतोय, अनुभवतोय आणि आपल्या हृदयात साठवतोय। न भूतो न भविष्यती अशी स्पर्धा या मांद्रे मतदार संघात आयोजित केली जाते। या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक रुपये 2 लाख, द्वितीय पारितोषिक रुपये 1 लाख इथपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी आपण यापूर्वी बऱ्याच वेळा ऐकली असतील, मात्र एकाच स्पर्धेत या पुढील बक्षीस यापूर्वी कधी आपण ऐकली नसतील। प्रथम क्रमांकासाठी रुपये 2 लाख आणि त्यासोबतच या टीम मध्ये खेळणाऱ्या 13 खेळाडूंसाठी पसीन स्कूटर आणि उपविजेत्या संघातील 13 खेळाडूंसाठी इलेक्ट्रिक सायकल्स, त्याचबरोबर सेमी युजर्ससाठी सुद्धा आकर्षक पारितोषिक आहेत। एक लकी ड्रॉ आहे आणि या लकी ड्रॉ मध्ये मिळेल आपल्याला एक खिल्लार बैल जो आपल्या शेतीच्या उपयोगाचा असेल आणि खास आकर्षण शेवटच्या दिवसासाठी गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल फेम संजू राठोड लाईव्ह कन्सर्ट आपल्यासाठी सगळी मांदियाळी घेऊन येत आहेत आपले सर्वांचे लाडके आमदार जीतभाई आरोलकर, आपला हक्काचा माणूस, हक्काचा आमदार। स्वागत आमदार चषक 2026च्या निमित्तानं। प्रथम फलंदाजी करताना उदरगत हरमल संघाने धावा जमवल्यात। नितेश गडकरच्या नेतृत्वाखाली 64 विजयासाठी 65 धावांचं लक्ष्य आणि उदरगत मांद्रे संघ 65 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करेल। सलामीची जोडी उदरगत हरमल संघाच्या वतीने स्ट्रायकर एंडवर दिसतोय। महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हा, या सांगली जिल्ह्यातील नागपंचमीसाठी प्रसिद्ध असणारा 32 शिराळे तालुका आणि या तालुक्यातील मांगले गावचा एक जगप्रसिद्ध खेळाडू म्हटलं तर वावगं ठरू नये, विजय पावले। ISPL गाजवली, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग गाजवली, सध्याच्या घडीला राष्ट्रीय स्तरावरील एक सर्वात तगडा ताकदवान अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं
टेनिस क्रिकेट लेदर क्रिकेटच्या दोन्ही आघाड्यांवर आपलं नाणं ज्यांनी खणखणीत वाजवलंय विजय पावले स्ट्रायकर एंडवर आणि सध्याच्या घडीला एका वेगळ्याच फॉर्म मध्ये असणारा सातारचा कंदीपेडा भूषण गोळे बॉलिंग मार्कवर. फुल टॉस होता, हलक्या हाताने मिड विकेटच्या दिशेने टोलवलाय विजय पावले याने. करायच्या आहेत 65 धावा, जास्त रिस्क घेण्याची गरज नसेल कारण पहिली 2 षटकं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, त्यानंतर 1 षटक असेल बॅटर चॉईस पॉवर प्ले अर्थात उदरगत ओव्हर, आणि त्यामुळे या 3 षटकांमध्ये मोठे प्रहार आपण करू शकतो. मात्र त्यासाठी विकेट आपल्या हाती असणं गरजेचं. ही रणनीती विजय पावले सरांची. पहिला चेंडू सिंगल स्ट्राईक रोटेट. गोपाळ गडेकरचा फटका फसतोय मिड ऑफच्या दिशेने आणि गोपाळ बाद झाल्यानंतर लगेच विजय पावले एक जळजळीत कटाक्ष टाकतोय. जी चूक चेंडूवर टेनिस-क्रिकेट.in वर ऍक्शन रिप्ले पाहूया. विजय पावले सरांनी पहिला चेंडू फुलटॉस असून मोह आवरला होता, मात्र दुसऱ्या बाजूने गोपाळ गडेकर या मोह जालात फसवला जातोय. मिड ऑफ क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षक एक साधा सोपा झेल आणि विकेटचं होतंय पतन 1 या धावसंख्येवर. करायच्या आहेत 65, मात्र या 65 धावा दिसतात तेवढ्या सोप्या नसतील कारण सध्याच्या घडीला एका वेगळ्या विशेष फॉर्म मध्ये असणारा गोलंदाज दिसतोय बॉलिंग मार्कवर. सांगायचं झालं तर गेल्याच आठवड्यात रॉयल किंग सावंतवाडीची स्पर्धा, या स्पर्धेत सुद्धा उत्कृष्ट गोलंदाजाचा किताब या खेळाडूने आपल्या नावावर केलाय. त्याच्या मागे जर आलात तर आप्पा वांगणकर यांच्या माध्यमातून वेदांत 11 हरंबोलची स्पर्धा याच भूषण गोळेने गाजवली. पुण्याच्या मैदानावर, देवगडच्या मैदानावर, मिडबावच्या मैदानावर, प्रत्येक मैदानावर ऑल इंडिया लेवलच्या स्पर्धेत फडकलेला हा झेंडा. यावेळी फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट चिकट घेऊन चेंडू गली क्षेत्रामध्ये प्रवास करतोय. पहिल्या प्रयत्नात फंबल होतोय पण दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडूवर नियंत्रण मिळवत आहे. नंबर 3 च्या पोझिशनवर ऋषिकेश गावडे, संघाचा कर्णधार नायक सेनापती येतोय. गोलंदाजी खूप सुंदर केली होती, 5 धावा देत 2 विकेट त्यांनी 2 षटकामध्ये आपल्या संघासाठी योगदान दिलंय. मात्र यावेळी त्याला बॅटिंगवर थोडंसं योगदान द्यावं लागेल विजयच्या साथीने. हलक्या हाताचा फटका शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. विजय पावले यांची रणनीती अगदी स्पष्ट आहे. भूषण गोळे सध्या फॉर्म मध्ये एक ताकदवान खेळाडू आहे, उंची भारदस्त आहे, खांद्याचा मनगटाचा वापर खूप सुयोग्य करतात. स्लोअर वन हे शस्त्र आहे, यॉर्कर हे ब्रह्मास्त्र आहे आणि आखूट टप्प्याचे चेंडू सुद्धा अगदी सडळ हस्ते ते वापरतात आणि त्यामुळेच विजय पावले यांना माहिती आहे भूषण गोळेची 2 षटकं आणि त्यासोबत अक्षय तावरेची 2 षटकं, त्यानंतर राज्य गाजवता येईल. यावेळी ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट किपरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, डॉट बॉलनीची धावसंख्या स्थिरावलेली 3 धावा. पहिलं षटक प्रगतीपथावर भूषण गोळे आगोकी गोलंदाजी करतोय. ज्याप्रमाणे नावातच त्याच्या गोळे आहे, मोगलांवर जे गोळे टाकले होते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अगदी त्या काळापासून ही जबाबदारी पार पाडतायत गोळेचे कुटुंबीय. यावेळी फुल टॉस मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, प्रयत्न करतोय, बॅटचं चुंबन घेणारा हा फटका क्षेत्ररक्षकाला बीट करत जातोय. डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार. उदरगत मांद्रे आयोजित आमदार चषक चौकार. धावा पहिल्या षटकाची सांगता करायच्या आहेत 65. पहिल्या 5 चेंडूवर विजय पावले यांनी संयम दाखवला पण संघाचा कर्णधार येतोय. भूषण गोळेच्या हातून जणू काही चेंडू निसटला, फुलटॉस बनवला आणि या फुलटॉसची ऋषिकेश वाटच पाहत होता. गोलंदाजी ऋषिकेशने काय सुंदर केली. 2 षटकामध्ये फक्त 5 धावा खर्च, 2 विकेट. कॅप्टन म्हणून आपली जबाबदारी त्यांनी
बॉलिंग मार्क वरून पूर्ण केली, आता जबाबदारी घेतोय बॅटिंगसाठी आणि पहिला चौकार या दुसऱ्या इनिंगचा. आत्मविश्वास तर वाढेल, धावसंख्या तर वाढलीच आहे. घाऊक स्वरूपात 4 ने एकूण धावसंख्या झाली 7. पहिलं षटक होतंय समाप्त. रत्नागिरी जेट संघाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये इतिहास रचणारा खेळाडू स्ट्रायकर यांच्या रिचेने सांगली एक्सप्रेस विजय पावले. 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात बाद होतोय फलंदाज गोपाळ गडेकर आणि यावेळी बॉलिंग मार्कवर विशाल वांगणकर. प्रत्येक टीम मध्ये ऑल इंडिया लेवलचे 2 आयकॉन. उदरगत हरमल संघासाठी भूषण गोळे मॅन फ्रॉम सातारा, अक्षय तावरे मॅन फ्रॉम बारामती. उदरगत मानरेम संघासाठी राजेश सोरटे मॅन फ्रॉम पुणे आणि विजय पावले सांगली एक्सप्रेस. उर्वरित सर्व खेळाडू एकाच गावातील, एकाच ग्रामपंचायतीत, एकाच पंचायत एरियातील. ड्राईव्ह मिड ऑफ सर्कलच्या आत क्लिअर केला जातोय मिड ऑफला आणि चेंडू जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. उदरगत मानरेम आयोजित आमदार चषक चौकार. लक 1-1 11 for 1 नेल्सन फिगर ऑन बोर्ड. करायच्यात 65. विजय पावले आता हळूहळू आपले हात खोलतायत. डंक करायला त्यांनी सुरुवात केलाय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त फडा काढली होती, पण या षटकात आक्रमण अटॅक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेन्स या तत्वाचा वापर होतोय. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. 9 खेळाडू सर्कलमध्ये, 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. लॉंग ऑन होता तो सर्कलच्या आत येईल, त्याऐवजी लॉंग ऑफ सर्कलच्या बाहेर जाईल. मिड ऑन दिसतोय सर्कलच्या बाहेर. हे 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. उर्वरित सगळे खेळाडू 9 खेळाडू दिसत आहेत सर्कलच्या आतमध्ये. या स्थितीमध्ये बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा विशाल वांगणकरचा हा चेंडू खोलवा टप्प्याचा स्वीप केला जातोय. फाईन लेग सर्कलच्या आत. बघता बघता चेंडू सीमारेषा पार. उदरगत मानरेम आयोजित सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या संकल्पनेतील आमदार चषक चौकार. डीजे सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार विजय पावले यांची. यावेळी सुद्धा पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक पाऊल पुढे तर आलं होते, पण गोलंदाज कौतुक करावं लागेल विशाल वांगणकरचा. चेंडू थोडासा शॉर्ट केला. या पिच कडून थोडीशी उसळी मिळवली. अनएक्सपेक्टेड बाउन्स विकेटकीपरच्या दिशेने. चेंडूचा प्रवास डॉट बॉल साठी. स्थिरावली धावसंख्या 15. स्विच करण्याचा प्रयत्न मिडल झाला होता की नाही अगदी थोड्याच वेळात. पंचांचा येतोय इशारा. लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हता. 21 धाव्यांची धावसंख्या होती 16. पहिल्या षटकामध्ये खूप नियंत्रित गोलंदाजी केली भूषण गोळे यांनी. 7 धावा खर्च केल्या. शेवटच्या चेंडूवर चौकार. गाडी क्रमांक GA 117251 ही माची रस्त्यार मदी पार्क केली असा माची गाडी काढची थंयच्यान. 16 धावा 16. सलग दुसऱ्यांदा स्विच करण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदा विजय पावले यांच्याकडून असफल राहिला. लेग बायची एक धाव मिळाली. यावेळी कर्णधार त्याचा सुद्धा इरादा स्विच करण्याचा तो सुद्धा असफल राहिला. चेंडू डॉट. विकेटकीपर नियंत्रण मिळवत आहेत. क्षेत्ररक्षण बघा. एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग दिसतो, एक शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट गली, एक शॉर्ट पॉइंट, कव्हर पॉइंट एक आणि मिड ऑन. हे सगळे खेळाडू सर्कलमध्ये. नियंत्रित गोलंदाजी. या षटकामध्ये मात्र पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार खर्च करूनही विशाल वांगणकर पुढचे 4ही चेंडू डॉट टाकतोय. वापसी मिळवून देतोय आपल्या संघाला. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या झाली 16. विजयासाठी 65 टार्गेट.
आपण पाहतोय सन्माननीय आमदार जितभाई आरोलकर यांच्या संकल्पनेतून कैलासाचे प्रदीप हडपडकर यांच्या स्मरणार्थ उदरगत मांद्रे आयोजित आमदार चषक 2026 हा थरार प्रथम क्रमांक रुपये 2 लाख सोबत या टीम मधील 13 खेळाडूंसाठी पसिनो मोटरसायकल, उपविजेत्या संघासाठी रुपये 1 लाख, या संघातील 13 खेळाडूंसाठी इलेक्ट्रिक सायकल्स आणि बरंच काही. शेवटच्या दिवसासाठी खास लकी ड्रॉ. या लकी ड्रॉ मध्ये एक सुंदर आकर्षक बैल जो शेतीच्या उपयोगाचा असेल आणि त्यासोबतच पहिलं मराठी गाणं, जे गाणं थेट न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअरच्या स्क्रीनवर झळकलं, गुलाबी साडी. आणि या गुलाबी साडी गीताचे गीतकार गायक संजू राठोड शेवटच्या दिवसाचं एक खास आकर्षण. तुझी कंबर हाय शेकी शेकी, कशी असते कंबर, कशी असते शेकी शेकी, या सगळ्या गोष्टी पाहण्यासाठी उद्याचा रविवारची सायंकाळ आपण राखीव ठेवा. आमदार चषकाच्या शेवटच्या 3 सामन्यासोबतच संजू राठोड प्रत्यक्ष लाईव्ह पाहण्यासाठी. यावेळी बॉलिंग मार्कवर भूषण गोळे, वैयक्तिक दुसरं, सांघिक तिसरं षटक, चपल खेळण्याचा प्रयत्न, शॉट फाईन लेगच्या दिशेने, विकेट मिळवतोय संघाचा महत्वाचा खेळाडू विजय पावले यांना बाद करण्यात भूषण गोळे यशस्वी होत आहेत. 16 धावा, 2 विकेटचं पतन. आपण कौतुक ऐकत होतं. मागच्या 2 महिन्यांमध्ये तळ कोकणातील बऱ्याच स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्यात. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी पासून या खेळाडूची चर्चा चालू झाली. सध्याच्या घडीला अगदी मागच्या 4 दिवसापूर्वीच ज्यांनी सावंतवाडीची स्पर्धा जिंकली, भूमी स्ट्रायकर्स या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना अष्टपैलू खेळ ज्याने दाखवलाय, यावेळी विजय पावले सरांना त्यांनी मोहित केलं. आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकला, हुक करण्याचा मोह विजय सरांच्या अंगलट येतोय. शॉट फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये टिकतोय, एक सुरेख झेल, दुसऱ्या विकेटचं होतंय पतन. मैदानाच्या बाहेर येताना फ्रस्ट्रेशन अगदी स्पष्ट जाणवतंय विजय पावले सरांच्या चेहऱ्यावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, अगदी सहज सीमा पार करू शकले असते. शॉट फाईन लेगचा एकच अडथळा होता, मात्र तो एकच अडथळा खूप मोठा मैलाचा दगड ठरतोय. वेदांत ट्रॉफीचा बेस्ट बॉलर यावेळी आमदार चषक गाजवण्यासाठी सज्ज होतोय. सातारचा हा कंदीपेडा भूषण गोळे, ज्याचं नाव पहिल्या षटकामध्ये 1 विकेट मिळवली, 7 धावा खर्च केल्या. या षटकात पहिल्या चेंडूवर पहिली विकेट, नंबर 4च्या पोझिशनवर राम योगेश हडपडकर. पहिला चेंडू सन्मान दिला जातोय. शॉर्ट मिड विकेट, जोपर्यंत डीप मधून येईल, फील्ड करेल तोपर्यंत 1 धावेची संधी. स्कोरशीट बदलली जाते. 17 या धावसंख्येपर्यंत स्ट्राईक सुद्धा रोटेट होते. संघाचा कर्णधार ऋषिकेश गावडे स्ट्रायकर एंडवर, ज्याने 1 चौकार तर खेचलाय. मात्र 5 चेंडू एकूण त्यांनी खेळलेत, यामध्ये 4 धावा फक्त, एकूण 4 डॉट बॉल आतापर्यंत. ही स्ट्रॅटेजी थोडीशी बदलावी लागेल, स्ट्राईक रोटेट ठेवावी लागेल, सिंगल डबल चालू ठेवावे लागतील. गती परिवर्तन, कोलवा टप्प्याचा चेंडू, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसलेला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, मात्र चेंडू या क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा लांब राहतोय. पॉइंट क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केला होता, कव्हर पॉइंट सुद्धा थोडासा डीप मध्ये होता, चान्स नव्हता क्षेत्ररक्षकाकडे, पण संधी तर तयार केली होती भूषणने. या 2 धावेनिशी धावसंख्या होते 19. 65 धावांचा पाठलाग. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, 3 चेंडू समाप्त, 3 धावा खर्च केल्यात भूषणने, 1 विकेट मिळवली. यावेळी स्वीप फाईन लेगच्या दिशेने, डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येतोय, फील्ड करतोय, तोपर्यंत दुसऱ्या धावेसाठी वळलेली पावलं, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, कर्णधार कसा असावा त्याचं सुरेख उदाहरण दाखवतोय ऋषिकेश. बॉलिंग तर सुंदर केली, बॅटिंग सुद्धा अप्रतिम करतोय, आपल्या टीमसाठी 100% योगदान देतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येत आणि बदलतोय धावफलक 21-21. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. अजूनही एक बॅटर चॉईस पॉवर प्ले असेल, उदरगत ओव्हर ज्याला म्हटली जाते, 3 ते 7च्या दरम्यान. एक नियम, या 3 षटकांसाठी वेगवेगळे गोलंदाज वापरावे लागतील आणि त्यामुळे संधी असेल का अजूनही एक मोठी. ड्राईव्ह मिड ऑफ नव्हता, लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होतोय. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या होते 22. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 1 चेंडू बाकी आहे. ज्या प्रकारे भूषण गोळे यांनी गोलंदाजी केली आतापर्यंत, 11 चेंडू त्यांनी टाकले,
पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा अपवाद वगळला तर प्रत्येक चेंडू दिशा टप्पा वेग यावर सुरेख नियंत्रण. एक मात्र चेंडू जो त्यांनी फुलटॉस टाकला होता ऋषिकेश यांच्यासाठी, ज्याच्यावर चौकार खणखणीत खेचला ऋषिकेशने, पण त्यानंतर अचूकतेचा बादशाह परततोय आपल्या योग्य ट्रॅकवर. दुसऱ्या वैयक्तिक षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन भूषण गोळे आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेने राम योगेश. अजून एक गती परिवर्तन. राम योगेशची रणनीती अगदी स्पष्ट आहे. डीप मिड विकेट सर्कलच्या खूपच बाहेर, आणि त्यामुळे हलक्या हाताने चेंडू खेळावेत, 2 धावे मिळवावेत ही त्याची रणनीती होती. मात्र अनपेक्षितरित्या भूषण गोळे चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. चेंडू फील्ड होतोय. एकेरी धावेवर समाधान मानतायत. 3 षटकांचा खेळ होतोय. समाप्त धावसंख्या होते 23. अजूनही 5 षटकांचा खेळ शिल्लक. 30 चेंडू 42 धावांची गरज. रिक्वायर्ड 42 फ्रॉम 30. डीजे तोय आपल्यासाठी जो आवाज IPL पर्यंत घुमलाय. IPLच्या मैदानावर सुद्धा ज्याने सुमधुर गायकीने रसिक प्रेक्षकांना मोहित केलंय. येता रविवार आपल्यासाठी असेल खास. सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या माध्यमातून आपल्या भेटीसाठी येतोय संजू राठोड. 3 षटकांची सांगता. धावसंख्या झाली 23. विशाल वांगणकर. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार विशालने खर्च केले. त्यानंतरचे सलग 4 बॉल त्याने डॉट टाकलेत. यावेळी आपल्या स्पेलची सांगता करणारे षटक घेऊन येतोय. स्ट्रायकर एंडवर राम योगेश. वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर सांघिक धावसंख्या 23. 30 चेंडू 42 धावांची गरज. सुंदर चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये. सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या माध्यमातून नुकताच गोमंतक भूमीचा सर्वात मोठा शिमगोत्सव आपण पाहिला. वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये 4 गटांमध्ये 2 लाख रुपयांचं प्रथम पारितोषिक प्रत्येक गटासाठी. आणि असा भव्यदिव्य शिमगोत्सव यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता. भविष्यात कधी पाहता येईल सांगता येत नाही. त्याचं आयोजन सुद्धा अजितभाईंनी केलं होतं. आवाज येतोय, अपील होत आहे. बॅटची कट घेऊन चेंडू जातोय विकेट किपरच्या सेफ हँड्स मध्ये. राम योगेश हडपडकर माघारी परत आहेत 3ऱ्या विकेटसाठी. 23-3. डीजे निखिल जेव्हा मैदानावर जातो आपण त्याचं नाव विचारतो. बॅटरचं नाव काय, बॉलरचं नाव काय, पण सध्या स्टाईल आली. सुंदरा सुंदरा तुझं नाव काय आहे. आणि हे गाणं सुद्धा आहे आपल्या लाडक्या संजू राठोडचं. सुंदरा सुंदरा काय आहे तिचं नाव, कसं विचारेल संजू. येत्या रविवारी ही सगळी गाणी लाईव्ह आपल्याला ऐकायला मिळतील. सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या माध्यमातून संजू राठोड लाईव्ह कन्सर्ट. धावसंख्या झाली 23. रोहित मांद्रेकर स्ट्रायकर एंडवर. ड्राईव्ह करतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. मिड विकेट वरून डीप वर क्षेत्ररक्षक येतोय, फील्ड करतोय. तोपर्यंत दुसऱ्या धावेची संधी नव्हे ही सुसंधी साधली जाते. आल्या आल्याच रोहित आपल्या टीमसाठी दुहेरी धावांची लहर आणि या दुहेरी धावेंसह पावशतक फलकावर लागते. 65 धावांचा पाठलाग. धावा झाल्यात 25, करायच्यात अजून 40. 4थ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 3 विकेट गेलेत आणि यामध्ये विजय पावले सर सॉफ्ट डिसमिसल होतं. हुक करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने ते झेलबाद झाले. ही एक मोठी विकेट आणि त्या विकेट नंतर उदरगत मांद्रेम संघ थोडासा बॅकफुटवर गेलाय. पुन्हा येईल का हा संघ फ्रंटफुटवर. एका बाजूने कॅप्टन लढतोय, त्याला साथ देतोय रोहित मांद्रेकर. गुडलेन स्पॉटच्या जवळपास चेंडू ठेवण्यात वारंवार यशस्वी होत आहेत विशाल वांगणकर.
पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार त्यांना विजय सरांनी खेचले, पण त्यानंतर नियंत्रण म्हणजे काय असतं अगदी सुनियंत्रित मारा त्यांच्याकडून पाहायला मिळतोय. प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष. या सिंगल बरोबर धावसंख्या झाली 26. चेसिंग द टार्गेट 65. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 4 चेंडू संपलेत. अजून एक उदरगत ओव्हर नक्की असेल. टाकू टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा इरादा होता, मिडल तर झाली नव्हती. बॅटची एज घेऊन चेंडू जातोय शॉर्ट मिड ऑन पर्यंत. एकेरी धावेनिशी बदलतोय धावफलक. धावा होत आहेत 27. टार्गेट आहे 65. निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होणारा चेंडू. चौथ्या षटकातील 6वा बॉल. 27. अजून एक चेंडू खोलवा टप्प्याचा. यॉर्कर लाईनचा सन्मान देतोय, फ्लिक करतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक सिंगल येते. एकेरी धावेनिशी 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. उदरगत मांजरेम संघ 65 धावांचा पाठलाग करताना या 4 षटकात धावा जमवतोय 28. शिल्लक राहिले चेंडू 24 आणि या 24 चेंडू मध्ये विजयाचं लक्ष 37 पावलांनी दूर. या उरलेल्या 4 षटकांमध्ये काय घडतंय, काय बिघडतंय सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर गोवा राज्याचा एक देखणा कॉमेंटेटर मॅन फ्रॉम शापोरा. ऐकूया आवाज श्याम कलंगुटकर. Thank you, Badal sir. 37 more runs required to win in 24 deliveries. Game evenly poised right now. Not too many wickets lost, and also the deliveries, 24 deliveries at the halfway mark with this 28 on the scorecard, requiring another 37. 37 to win. Bhushan Gore just redirecting his bowler. We're trying to give him some words of advice. And the power play has been taken, the batting power play. Akshay Tabre from the far end. I'm talking about the batting display of Udargat Harmal. It was only that man, Bhushan Gore, with 37, top of the pile. As far as the other batsmen were concerned, it just looks like a phone number. Nobody really contributing apart from Dhananjay Vast at the opening stand. And some really good boundaries by that opener Dhananjay Vast, and some terrific bowling. A good comeback as far as the bowling of Udargat Manrem was concerned, restricting them just on 64. Requiring 37, here's Akshay Thabre in this power play over. 3 fielders out of the 30-yard ring. Man at deep square, man at deep mid-wicket, and man at wideish long off on the fence. Whereas the rest inside the 30-yard ring. 2 men in at the moment. Rohit Mandrekar, he just plays it through the fielder. At the deep extra cover will be just 1. So far, a very good result is with the single. Won't be worried too much at this stage, the Harmal, with the singles. Udargat meaning the progress, and the progress has certainly been seen by the Amdar Chashak. Short delivery again, trying to go aerial, missed out. Dot delivery. All these games live on YouTube through tenniswicket.in. You can see everything through them, clean, crystal clear. Throughout this Amdar Chashak 2026 star attraction that will be on Sunday. Sanju Rathod will be in the house. Full delivery again, very well bowled. Akshay Thabre has he over, and that one looking for the second chance of a run out. No, not quite. A better throw would have had him in trouble. Score moves on to 31, requiring another 34 runs to win. 34 required now in 21 deliveries. And Nikhil Kudav doing all the scoring, the manual scoring. Vignesh, very fit these days, looking after his fitness, along with Damba, who is out there guarding the bikes.
Swing and a miss. Again, a slow delivery time. Game has evolved over the years. The batsmen have got so much advantage, so much in their favor. The bowlers need to be very street smart as they need to try and mix their pace up. And the batsmen need to be ready as well for those slow deliveries. Again, very full, and this time it's a wide, extras. Score moves on to 32 officials in the middle. Siddesh Harmalkar along with his partner, the very senior Sushant Salgaonkar. Full toss, played on the onside. Good work by the fielder. Chance, oh, wayward throw. A better throw would have had the batsman in trouble, but wasn't to be. Precarious to be the least. This entire outfield, you need to be very careful while you are in the 30 yards as well as on the boundary rope. Just need to keep your eyes on it till the very last moment. You miss and you can cost your team. Score moves on to 34, requiring another 31 to win. 31 more required in 19 deliveries. So far, a tidy over this. Can he finish it off? Akshay Tavre. He does. In fact, that's a wide. More extras. Match coming up next. Udargat Morjim to take on Udargat Virnoda. Udargat Virnoda winning the toss, deciding to bowl first. Full toss. In the air. Chance. Fielder going back. And that's taken. Dhananjay was taking the catch. And that's a timely wicket as far as Udargat Harmal are concerned. The man in green are celebrating with that wicket. Throughout the night, later on, some exciting teams as well. New man in the overseas, Rajesh Shorte. That was a fantastic over bowled by Akshay Tavre. 7 runs coming from it and a wicket. Now the equation is 30 required in the last 3 overs. 3 overs requiring 30. Swapnil Parab has been given the ball in this particular over. "30 runs required to win in the last 3 overs. 10 runs per over, the asking rate right now as far as Udargat Mandrem are concerned. Rohit Mandrekar is still in the middle. Rajesh Shorte has just joined him. Yes, Swapnil bowls a full toss down the ground, over the top. The fielder was inside the 30-yard ring. He played it over his head and gets a boundary on the very first delivery. Again, you can't afford to bowl full tosses at this stage. Just that Bhushan Gore telling him not to try and do too many things, as 1 over can cost us the game. Need to be straight, need to be full.
on the 8th delivery of the innings was the first boundary. And now this has been the boundary that they were looking for so desperately. Udargat Mandrim. Reverse attempted, missed out. Dot delivery. Pressure all around, pressure situation. Got the boundary on the first delivery. Needed to be trying get a single, so that you need to be rotating the strike rather than trying to put more pressure on your partner and on yourself. Full delivery down the ground, this time in the air and taken. Akshay Tavre takes the catch. The ball was dipping on him, but really good adjustment in the end to take yet another wicket. Half side done packing as Rohit Mandrekar departs. 39 for 5, Udargat Mandrim. Equation just in control as far as Harmal are concerned right now. As I said earlier, it's an even contest between these two. Both the Udargats, Harmal as well as Mandrim. Very close by, neighbors. In fact, both to the other end. Swapnil Parab again. Full delivery this time in his own follow through. Very well bowled. Bit excited, the 12th man in the com box, and why wouldn't he be? Swing and a miss. Appealing. Bhushan Gore went up straight away. They're trying to convince the official, but he can't. And a review has been taken to check if it's a wide or not. To check if it's a wide or not, we'll have a look. The television umpire will just join the director to check whether if it's a fair delivery or not. On-field umpire has ruled it a fair delivery. TV umpire to director, we have a player review for a legal delivery or not. Front on spin vision, everything looks fine. Moving on towards the direction of the ball. And it will stay as a fair delivery. Perfect delivery this. Bowling that outside the off-stump line. Not trying the batsman to hamper him from the room. Just keeping it away. But bowling it wide, but bowling it smartly into the hands of the wicketkeeper. Nicely played in the air. Chance again. Oh, just falling short of that fielder. Really good effort, but will allow Prem to get back for the second. And that's the over done. Over number 6 has been completed. 6 runs coming from that over and a wicket. Score moves on to 41. So requiring another 24 runs to win. 24 runs required in the remaining 12 deliveries. 12 deliveries, 24 runs. Double the asking rate for the Udargat Mandrim. Who is it going to be to bowl this particular over? This penultimate over. A very important over in the context of this run chase. And looks like it will be again Akshay Tavre. Well, he has been trusted to bowl this over.
First game, and that to a cracker. Well, you can see the bowling performances by the bowlers of Udargat Harmal. 7, 8, 7, 5, 7, 6. That is the economy. And almost everyone picking up wickets in those overs. Just that Vishal Vaingankar didn't pick up the wicket in his first over, but got it into his second. So far has been a very economical performance. 24 runs required in the last 2 overs. Overseas versus the overseas, goes down the ground in the arrow, cleared the man. Not in a fabulous position to take the catch. Gone over him, and that's one bounce into the fence for 4. It just bounced in, and the official just confirming to the scorer that it went for 4. So now requiring 20 in the last 11. And that fielder needed to be on the fence rather than was inside. A way to in. Maybe another 2-3 meters on the fence would have been a clean catch. 20 required in 11. Bowled it full. That's up in the air. Fielder this time. Taken. Dhananjay Vast completes the catch. Safest pair of hands. And Rajesh Sote departs. 6th wicket down. He's gone for 4. And still needing 20 in 10. Can he strike 2 or 3 powerful blows into the crowd? Well, the seats are just getting full. People will come in. It's a very hot and humid day. Yes, that's what the soaring temperatures in the month of March, April, May. Sunny Shetty talking about rain, some drizzles in parts of Goa. So it will try to heat up. Full delivery, that's up in the air. Bowler in his own follow through. Taken. Another wicket. Will be on a hat trick. Akshay Tavre. A terrific comeback this by the bowlers of Udargat Harmal. In trouble. Manrem. Trick, Akshay Thavre. And to face this music of this hat-trick delivery, it will be Shantaram. What kind of field does the skipper put? Or does he try and win an extra men inside the 30-yard ring to try and stop the single? He doesn't at this stage, as 20 runs required. Reverse attempted, missed out. In fact, that's a wide. Extras. 19 runs required. 19 to win in the remaining 9 deliveries. 9 deliveries, 19 runs. Game of 3 big hits. Easier said than done. Someone should hit them. These 2 men, have they got the power to power their team into the next round? Into the... Oh, very well bowled. He's appealing. Bhushan Gore looks very confident. He's pleading. You can't take the review. It's not for the dismissal. It's only for the wides and the no balls. You can't take it for the dismissal.
Still not happy. It's come off the trouser. It's off the leg. Fabulous decision that by Siddesh Harmalkar, stand-in umpire. Terrific decision. It's not the bowlers, batsmen, but the umpires are on the hot seat. So far in this over, just the 5 runs, 1 delivery left. Last delivery, 7 deliveries requiring 19 runs. Is the game slipping away from the hands of Mandrem? Or are they trying to make a comeback on this particular delivery now? Bowled it full, trying the ramp, missed out. Dot delivery to end the over. Fabulous over coming to an end. All the overs so far have been bowled are in single figures. 8 runs of the second over. That was the only expensive over. Apart from that, 7, 5, 6, and now 5. And picking up 2 wickets. Akshay Tabre has completely turned it around. 2 overs, no maidens, 12 runs and 3 wickets. Fabulous bowling display. 19 runs required to win of the final 6 deliveries. Last 6 deliveries and 19 runs. 3 maximums needed for the Udargat Mandrem to stay in the hunt. "19 runs of the last 6 deliveries. Dhananjay Vast has been given the ball. Man on strike, Shantaram. In fact, it's Prem on strike. His partner Shantaram at the other end. 6 deliveries, 19 runs. False start. Well, rightly said. Damba has been very quiet, hasn't been getting any deliveries outside the boundary, just waving his hand. Gets a breather right now, but will be in action very soon. Again, false start. Wasting too much of time. Maybe doesn't want to bowl this over. They're trying to change or just a bit of word to the official. Once you've decided that you are going to bowl this over, you need to be bowling this over. Just that official explaining it to the bowler and his senior partner. Bhushan Gore running down. Just trying to give some kind of help to the bowler. Trying to whisper in his ear something, some message. Maybe not to try and bowl any extras. Still banking on the likes of Prem. 19 runs required in 6 deliveries. Can he go with the wind onto the onside, onto those vacant stands? He does, but this time in the air. And will fall safe, looking for the second, chancing the arm of the fielder and will make it quite comfortably. 2 more runs have been added. 17 required now in 5. Score moves on to 48. Requiring 17 of the last 5 deliveries. 17 of 5. Not happy with something. Maybe his landing area is a bit of a concern. Missing a step. He's done it thrice now. That also just shifts the focus and also tries to break the momentum. The rhythm gets broken. 5 deliveries, 17 runs. Full toss, this time down the ground.
will be just one. Can he get back for the second? No. Perfect return from the boundary rope, just above the stumps. A single has been taken. Akshay Tavre into the outfield. 2 overs. Fabulous bowling performance. 12 runs, 3 wickets. Terrific display of bowling. Will be a really good spectacle this as we move into the twilight and then the night. The lights will come on and the stand just exactly opposite to us through the pitch. The Fasinos being arranged, so do these bicycles. Reverse attempted, missed out. Again, this is some fabulous bowling by the bowlers of Harmal. Leg by the signal given. Score moves on to 50. 50 up in the last over. Requiring another 15 runs of last 3 deliveries. 3 deliveries, 15 runs. Have they got any fuel left? These 2 batsmen in the middle, especially Prem. Can he stamp his authority? 3 deliveries, 15 runs to get. Full delivery, blast that one down the ground on the bounce to the fielder. Will be just one. Looking for the second, chance of a run out. Well, he has made it, and at the other end, he has been referred to the television umpire. Bit casual in getting towards the other end, towards the danger end. Naked eye, it looks very close. We'll have a look. Bhushan Gore not that tentative or not that excited with that run out appeal. Will be touch and go. Is it in? Is it out? We'll just give you the verdict in a short while. Red signal comes as that's out. Another wicket. They lose there another. 51 on the scorecard, still requiring another 13 runs. In fact, 14 runs to win. 14 in the last 2 deliveries. New man in Pravin. 2 deliveries, 14 runs. Still gettable. If it's a wide or a no ball, any extras, a help of extras. But so far the bowling has been pinpoint by the bowlers of Udargat Harmal. It all started with Bhushan Gore in that first over, picking up a wicket, giving 7 runs. And now into the last over, defending 19 runs. Full toss in the air, chance, fielder taken. Again, you just can't keep that man out of the game. Akshay Tavre, he's everywhere. He's among wickets, he's taken the catches. And putting on a close to this innings of Udargat Mandrim. 65 runs were the target required to win. One stage it looked like they are just cautiously marching towards the total. But some terrific bowling by all the bowlers of Udargat Harmal have stinted them, restricted them to this total now. 1 delivery left and requiring 14 runs. New man in Suyash. Full toss delivery, fence it down the ground and will be it. Victory
for the Udargat Harmal. Some fabulous cricket. I thought at one stage it looked like 65 would be a stroll in the park for Udargat Mandrem, but it wasn't, as the bowlers did some fabulous job in restricting the Mandrem to only few runs, falling short by 12 runs in the end. And a man of the match in this particular game. Some terrific bowling, some fabulous captaincy, some really good help to all the bowlers, putting in some inputs. And 37 at the beginning that he scored, Bhushan Gore, with just 23 deliveries, 3 maximums, 2 boundaries, is the man of the match. And rightly so, he is the player of the game for his good all-round performance. 2 wickets and 37 runs with the bat has awarded him the man of the match in this first game, inaugural game of the Amdar Chashak 2026. We'll shortly have the presentation ceremony at the presentation podium. And at the start of the next innings, as Virnoda take the field, as all the supporters of Virnoda